नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो है रोमांच, डर और मस्ती से भरपूर। जी हाँ, हम हैं ऋषिकेश के राफ्टिंग पॉइंट पर। हमने अपनी यात्रा शुरू की हरिद्वार से और लगभग 1-1.5 घंटे में पहुंच गए ऋषिकेश। यहाँ की वादियाँ, पहाड़ और गंगा नदी का सौंदर्य मन को मोह लेता है। अब हम तैयार हो रहे हैं राफ्टिंग के लिए। लाइफ जैकेट, हेलमेट और सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस। गाइड ने सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन बताया कि पैडल कैसे चलाने हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे करने हैं। जैसे ही हम राफ्ट को गंगा में उतरा, ठंडी हवा और बहता हुआ पानी हमें स्वागत करता हुआ नज़र आया। पहला रैपिड इनिशिएशन और हमारी धड़कनें तेज आया, फिर रोलर कोस्टर और फिर गोल्फ कोर्स। हर मोड़ पर चुनौती। भाई मज़ा आ गया। ये ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। अब गाइड ने हमें इजाज़त दी कि पानी में कूदने की। दोस्तों, गंगा का पानी इतना ठंडा और साफ़ और ताजगी का एहसास दिलाया। तो दोस्तों, हमारी राफ्टिंग कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगी। आप इस राफ्टिंग का मज़ा लेते रहिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और आपको मैं एक बार ये ज़रूर बोलूँगा कि गर्मी के सीज़न में एक बार राफ्टिंग ज़िंदगी में ज़रूर करें, क्योंकि जीवन में जो डर होता है ना, वो डर यहाँ राफ्टिंग में जाके ही आपका ख़त्म होता है। बहता हुआ पानी और आपको अगर एक गाइड अच्छा मिल गया तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये रोमांचक सफ़र इतना सुंदर अनुभव देगा कि आपको लाइफ टाइम के लिए। ये मैंने पहली बार किया। तो दोस्तों, हमारी राफ्टिंग ख़त्म होने वाली है। बहुत अद्भुत, मतलब डर लग रहा था, लेकिन डर के बाद जो खुशी और रोमांच मिला उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहली बार किया था और गाइड बहुत प्रोफेशनल था, जो टीम वर्क के साथ पूरी राफ्टिंग को बहुत आसान बना दिया। अगर आप कभी ऋषिकेश आएँ तो राफ्टिंग ज़रूर करें। ये अनुभव आपको न सिर्फ रोमांच देगा बल्कि जीवन में कुछ नया करने का आत्मविश्वास भी देगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको ये राफ्टिंग का सफ़र कैसा लगा और आप कब जा रहे हैं राफ्टिंग करने। जय माँ गंगे। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। थैंक यू। एंजॉय कीजिए लास्ट तक इस वीडियो को। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album. It came out the same day as Kanye's. I made my best single. Came out and felt so great.
for that someone. Head for the hills for nothing. Running, scared, screaming at the top of my lungs. In my many minds, my heart doesn't always agree. What I'm thinking inside. Think about it, your gut can lie. Like when you're hungry but it hurts to eat. Do you actually wanna die? No matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes sense. And I think I heard Bigfoot. Did he run away? I don't know. I would have invited him in my tent so we can drink some miso soup. It's dangerous. In peace. No. And talk. Don't do that. About conspiracy theories. Maybe all night. I wonder if he believes in alien. We could look at the stars together. What if he is an alien? What if we actually become the best of friends and we wear shirts with pictures of each other on them? Head over heels for that someone. Head for the hills for nothing. Running, scared, screaming at the top of my lungs. In my many minds, my heart doesn't always agree. What I'm thinking inside. Think about it, your gut can lie. Like when you're hungry but it hurts to eat. Do you actually wanna die? No matter how